Hello friends, I am going to practice with NET and PhD in test preparation. I am Dr. Anjani Kumar, cyber and digital forensic expert. The practice set is paper 2 forensic science. Question 1. First question is, which of the following best defines forensics? The option is the study of natural phenomena. The option B, the application of scientific principle to criminal investigation. Option C, the study of historical artifact. Option D, the use of scientific method to improve public health. The correct answer is the application of scientific principle to criminal investigation. Next question is question 2. The term forensic is derived from the Latin word forensis, which means first option is criminal, second option is public, third option is court of law, fourth option is scientific. The correct answer is court of question is question 3. Which of the following is not a principle of forensic science? Option A, individualities. Option B, exchange. Option C, diversity of matter. Option D, uniformitarianism. Option D is correct. Next question की ओर the principle of individuality states that every object, nature or man-made has an individuality which is not duplicated in any other object. Option B is object break in a unique way. Option C, two objects will always leave traces of each other then when they comes into contact. Option D, none of the above. The correct answer is every object, natural or correct answer is A. The every object, natural or man-made, has an individuality which is not duplicated in any other object. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन 5. Who formulated the principle of exchange? Alphonse Ferdinand, Edmond Locard. Third option is Hans Cross. Fourth is Matthew Orfila. Correct answer is Edmond Locard. Next question. आगे बढ़ते हैं. Locard exchange principle states
Locard exchange principle state every context leaves a trace, evidence can be easily destroyed, objects retain individuality, none of the above. The correct answer is every context leaves a trace. कोई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट which principle emphasize that physical evidence cannot be created or destroyed but only changed from another to another one from to another. ऑप्शन है लॉ ऑफ प्रिजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एविडेंस, प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज, प्रिंसिपल ऑफ divisibility of matter. Correct option is law of conservation of independence. Option B. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. इन फोरेंसिक साइंस द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन रेफर टू. और ये रहे ऑप्शन कंपेयरिंग एविडेंस विद नाउन स्टैंडर्ड्स और कंट्रोल सैंपल्स. सेकेंड ऑप्शन इज आइडेंटिफाई द ओरिजिन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. C. Determining the time of death. D. None of the above. A. Comparing evidence with known standards और control samples. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन the principle which states that everything involved in a crime can provide information about the crime is called. और ये रहे ऑप्शन प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सलिटी. The correct answer is principle of universality. नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं. अगला क्वेश्चन है the principle that involve the examination of transparency is known as. First option A principle of transfer, option B principle of divisibility, C principle of comparison, D principle of exchange. ये रहे करेक्ट आंसर इज प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज. नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. द प्रिंसिपल ऑफ divisibility of matter suggestion. Option matter cannot be destroyed, objects can be divided into smaller parts which retain characteristics of the original, matter is always conserved. Option D none of the above. Can be divided into smaller parts which retain characteristics of the original. अगला ऑप्शन अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 12. फोरेंसिक साइंस प्राइमरली सर्व विच पर्पस. और
ये रहे ऑप्शन प्रोसिक्यूशन, सेकंड इज डिफेंस, थर्ड इज ट्रूथ फाइंडिंग, फोर्थ इज पब्लिक ओपिनियन। ये रहे ऑप्शन, ये रहे आंसर ट्रूथ फाइंडिंग। क्वेश्चन 13, the application of forensic science is to, ये रहे ऑप्शन ए क्रिमिनल केसेज, बी सिविल केसेज, सी के बोथ क्रिमिनल एंड सिविल केसेज, डी नन ऑफ द अबव। ये रहे आंसर, राइट आंसर इज बोथ क्रिमिनल एंड सिविल केसेज, सी। ऑप्शन 14, who is considered the father of forensic toxicology? ये रहे ऑप्शन मोतियो ओर्फिला, बी अल्फोंस पर्टिलोन, सी हांस क्रॉस, डी एडमंड लोकार्ड। करेक्ट आंसर इज मोतियो ओर्फिला, ऑप्शन ए। नेक्स्ट question is question 15. In the forensic science, the principle of comparison is crucial for, ये रहे ऑप्शन identify suspect, matching physical evidence and control sample, C determining the time of event, D establishing a timeline। ये रहे आंसर, इसका करेक्ट आंसर है मैचिंग फिजिकल एविडेंस विद कंट्रोल सैंपल्स। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्सटेंसेस यूजिंग साइंटिफिक मेथड इज नोन एज, ये ऑप्शन एनालिसिस, बी सिंथेसिस, सी हाइपोथेसिस, डी कंक्लूजन। Correct answer A is analysis. The use of fingerprint in forensic investigation is based on which principle? ये रहे ऑप्शन, प्रिंसिपल ऑफ डिविजिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन, प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज। करेक्ट आंसर इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। क्वेश्चन 18। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट इज नाउन एज, ये रहे ऑप्शन, टेक्टाइलोस्कोपी, एंथ्रोपोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, सीरोलॉजी। करेक्ट ऑप्शन इज टेक्टाइलोस्कोपी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, which branch of forensic science deals with the examination of handwriting and printed document? ये टॉक्सिकोलॉजी, बी सीरोलॉजी, सी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, डी बैलिस्टिक। करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट, इन फोरेंसिक साइंस the term drives evidence refer to large piece of evidence, microscopic piece of evidence, oral testimony, documentary evidence. The correct option is microscopic piece of evidence. Thank you.